क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। टॉपिक का नाम है जनरल एंट्रीज, T.S.grewal क्लास 11 की बुक में से। देखें क्वेश्चन में क्या दे रखा है। जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस ऑफ सिंह एंटरप्राइजेस दिल्ली। आइए एक एक करके सारी एंट्रीज करते हैं। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। भाई बिजनेस स्टार्ट किया है कैश लगा करके, एंट्री हो गई कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। बीइंग बिजनेस started with cash। अमाउंट कितना है? अमाउंट है 50,000। आइए आगे चलते हैं। डिपॉजिट चेक फ्रॉम सेविंग बैंक टू फर्म्स अकाउंट। ठीक है, सेविंग बैंक का चेक काट करके बैंक में डिपॉजिट कर दिया फर्म के, तो बैंक का बैलेंस बढ़ गया और जो पैसा हम सेविंग से बिजनेस के अकाउंट में डाल रहे हैं उसे भी हम कैपिटल बोलते हैं। बीइंग कैश इन्वेस्टेड इन बिजनेस। अमाउंट कितना है मेरा? 2 लाख रुपीज। रिसीव चेक फ्रॉम राम एज लोन। राम से चेक रिसीव कर लिया। अब क्योंकि राम के चेक के बारे में और तो कोई डिटेल है नहीं, तो हम यही मानेंगे कि वो चेक हमने बैंक में डाल दिया है। बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन फ्रॉम राम अकाउंट। बीइंग लोन फ्रॉम राम check deposited in बैंक। अमाउंट दे रखा है 50,000। एंट्री नंबर 4 देखेंगे। परचेज गुड्स फॉर कैश। परचेज अकाउंट डेबिट to cash। Being goods purchased। अमाउंट है 15,000। सोल्ड गुड्स टू मैसर्स हैरी साड़ी दिल्ली। माल बेच दिया है। मैसर्स हरी साड़ी, हरी सेल्स टू सेल। बीइंग गुड्स सोल्ड। $12,000। आइए 6th एंट्री करेंगे। ओहो, मैंने तो सीरियल ऑर्डर डाल दी भाई। 2, 3, 4। ये जो एंट्री है इसकी डेट चेंज कर देता हूं भाई। ये 11th डेट पर है और इसके बाद अब हम 13th की एंट्री, 13 जून की एंट्री करेंगे। 13 जून को लिखा है पेड टू राम अवतार बाय चेक एडवांस फॉर मशीनरी। एडवांस फॉर मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक। बीइंग एडवांस पेड टू राम अवतार 40,000। 17th June, received from Messrs.
हरी सेल्स दिल्ली, कैश रिसीव कर लिया हमने 10,000 का, कैश अकाउंट डेबिट टू मैसर्स हरी सेल्स, बीइंग कैश रिसीव्ड, being cash received, $10,000, June 20, bought furniture from SR Furnishers against check payment. Furniture account debit to bank, being furniture purchased. Amount है 22,400, 22,400. 27th June, paid rent by check, rent account debit to bank account, being rent paid by check, being rent paid by check. Amount है 28,000. Next is sold the personal car and invest the amount in business. अपनी पर्सनल गाड़ी बेच दी और उसका पैसा बिजनेस में लगा दिया, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, being cash invested as capital. Amount है 80,000. Next is 27th. Goods lost by fire. Loss by fire to purchases, being goods lost by fire. Amount है मेरा 2,000. आइए आगे चलते हैं. June 30, पेड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर एम्प्लॉइज. तो इंश्योरेंस प्रीमियम क्योंकि एम्प्लॉइज का है, अगर मालिक का खुद का होता तो मैं ड्राइंग यूज करता. टू कैश, बीइंग इंश्योरेंस पेड. June, salary paid, salary account debit to cash. Amount है इंश्योरेंस प्रीमियम है 5,000 और सैलरी का अमाउंट है 20,000. आइए अब इनका टोटल कर लेते हैं. 5,34,400. तो यही टोटल मेरा दोनों साइड आ रहा है. फाइनली क्वेश्चन इसी तरीके से करना है. क्वेश्चन में कोई भी डाउट है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं. वीडियो अच्छी लगे तो लाइक बटन प्रेस कर दीजिएगा. और अगर इस टॉपिक के ऊपर अभी तक आपने मेरा वीडियो लेक्चर नहीं देखा तो उसे जरूर देखिए, क्योंकि उसको देखने से ये सारे के सारे क्वेश्चंस बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगे.